हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड एज यू नो, आज के वीडियो से वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर मेन ऐप। और इस वीडियो में वी आर गोइंग टू मेक अ लॉगिन साइन अप स्क्रीन यूआई। ठीक है, जो कि पूरा स्क्रैच से होने वाला है और अपन सब चीज़ को कस्टमाइज करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। So before starting that, please make sure you like and subscribe the channel, and let's begin with it. So for today, we have like some things. First of all, we have to import some of the packages. जैसे कि प्लीज इम्पोर्ट पब फ्लटर पब एट गूगल फॉन्ट्स, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइक पैकेज है जिससे अपन बहुत सारे मल्टीपल फॉन्ट्स डाउनलोड कर सकते हैं. आफ्टर दैट लेट्स मेक सम ऑफ द फोल्डर्स जिसमें अपने पास चीज़ों को क्लासिफाई करना बहुत आसान हो. और एज अ फ्लटर डेवलपर यू शुड नो कि आपकी कौन सी फाइल कहाँ पे रखी है. तो लेट्स मेक अ फोल्डर फॉर ऑथ which contains all the authentication, क्योंकि login sign up authentication में आता है. And in the auth we have one screen which is a login screen. So let us name as login.dart, and inside login.dart we'll create a stateful widget which will be named as login. And in login we'll import this. So we have created a screen, and this screen will be going here. And basically what happens is we'll be like going splash, and to splash we will navigate to not home screen, to login screen. Perfect. So this is how we are going to navigate. So perfect, and we can remove next of the code which is not required from here my class, because we'll be not requiring all this. Let's remove this and refresh it and try to restart the code and see what happens. You can see on the app screen. So perfect. So let's start with building the APK, which is most important for us. And till the time app begins, let's try to make some of the things. Let me stop this because I think it is going on debug mode, which I don't want. So we'll be running without the debug session. Okay, so let's start with the login screen. So for login screen, we have to make some of the things. अब login screen basically होती क्या है? अगर आप different apps देखोगे तो हर app में एक login screen होती है. login screen क्या होती है? जहाँ पे आप email डाल दो, password डाल दो and many multiple things डाल दो. So वही चीज़ बनाते हैं. अब इसमें अपने पास दो चीज़ों की requirement होगी. सबसे पहले होगा एक text field और एक text बटन, जिसमें सब चीजें वहां पे जाएगी. तो फॉर क्रिएटिंग द टेक्स्ट फील्ड अब होगा क्या, टेक्स्ट फील्ड एक ऐसी चीज है जो हर जगह कॉमन होगी. तो उसके लिए एक अपन अलग फोल्डर बनाते हैं जहां पे अपने सारे कॉमन चीजें होंगी. तो लेट अस नेम एज कॉमन. So this will contain all the common widgets which we are going to see. तो आप देख सकते हो we have builded the APK. So अभी अपन ने जो चीज़ें हटा दी थी और यहाँ पे एक नई स्क्रीन डाली है, इसीलिए यहाँ पे ब्लैक स्क्रीन आ रही है. तो सबसे पहले लेट्स रिमूव दिस कंटेनर टू scaffold and give it a background color of white. Perfect. So you can see the thing over here, and the one thing we can more do is to like false debug checker, I think. It will be here only, I think. Debug checker. Yeah, let's make it false, and you'll see the above band will be gone. So let's start with the development.
So let's create one of the widget which is a text field डॉट डॉट और ये मैं कॉपी करके लाया हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है इसलिए विल जस्ट गोना पेस्ट इट है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है एंड आई विल ऑल्सो गिव यू दिस ओवर ओवर डिस्क्रिप्शन और अ फाइल ऑल्सो यू कैन कॉपी दैट तो विजिट क्या होती है विजिट इज जस्ट बेसिकली एक ऐसी एंटिटी होती है जहां पे यू कैन जस्ट गो एंड उस चीज को आप बार बार यूज कर सकते हो तो कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं जो अपन को स्क्रीन में बार बार यूज करने रहते हैं तो वो चीज के अपन विजिट बना देते हैं तो दैट्स हाउ विजिट वर्क्स तो ये चीज पे बार बार टेक्स्ट फील्ड बार बार दूसरी दूसरी स्क्रीन पे लगने वाली है क्योंकि सर्च स्क्रीन में लगेगी तो अपन हर बार एक टेक्स्ट फील्ड का कोड तो नहीं लिखेंगे ना क्योंकि टेक्स्ट फील्ड का कोड इज अ बिग टेक्स्ट फील्ड का जो कोड है ऐसा बिग कोड है तो उसको करने से अच्छा वी हैव जस्ट मेड अ कॉमन विजिट जहां पे सारी चीजें विल बी देयर एंड विल बी यूजिंग दैट ओके सो let's just paste the widget and I'll explain you so this is the widget which we are going to use so first of all we have created a custom text field which is कस्टमाइजेबल और यहाँ पे अपन ने दो पैरामीटर्स पास करे हैं सबसे पहला पैरामीटर है की जो कि नलेबल है अगर मैं उसको नहीं भी दूंगा तो भी चलेगा और दूसरा है जो रिक्वायर्ड है वो टेक्स्ट टेक्स्ट ये लाइक रिप्रेजेंट करता है कि अगर मैं कुछ भी डाल रहा हूँ उसके नेम में जैसे टेक्स्ट फील्ड में नाम लिखना पड़ेगा टेक्स्ट क्योंकि जब तक मैं नाम नहीं लिखूंगा इट वोंट गिव मी द सोल्यूशन की और मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पाऊंगा तो सेम चीज यहाँ पे दो पैरामीटर्स पास किए गए हैं आफ्टर दैट वी हैव डिजाइंड इट तो डिजाइन में अपन ने कंटेनर यूज किया है जिसपे अपन ने बॉर्डर्स पे कर्व लगाए हैं एंड देन वी हैव इम्प्लीमेंटेड ऑल द टेक्स्ट सो लेट मी शो यू हाउ इट लुक्स एंड कंटिन्यू विद आवर वीडियो so first of all let's go to our login screen and inside login screen we'll be making a body and inside body let's call a column column will contain some of the things which is very important first of all it will contain text जो कि बोलेगा कि ये login screen है and next thing it will be containing the text fields and a button so let's make a text over here and for text let's make right login and inside login let's use that package which we have implemented it will be inside, implemented under the style and in style we can call Google Fonts. So the Google font जो सबसे सुंदर लगता है is a Poppins which we are going to use and you can let's try to refresh it and you can see in our screen कि ये visible है और अगर मैं इसको एक कॉलम को एक पैडिंग दे देता हूँ जो कि है 20 की तो वो कुछ बीच में आ जाएगा यू कैन सी कि लॉगिन दिख रहा है पर द कैच इज वो जो लॉगिन है वो एक सही फॉन्ट और सही डायमेंशंस में नहीं है तो यहाँ साइज बॉक्स की मैं हाइट देने वाला हूँ 30 जिससे वो थोड़ा सा नीचे आ जाए एंड विल बी लाइक उसको और नीचे करेंगे सबसे पहले अपन लॉगिन को और सुंदर कर लेते हैं तो फॉर मेकिंग इट और सुंदर वी हैव सम ऑफ द थिंग्स जो कि सबसे पहली चीज है अपन इसका फॉन्ट साइज बढ़ा देते हैं तो फॉन्ट साइज में विल गिव 30 व्हाट यू से let's make it big so this is perfect I think and then we can also make it larger और बहुत सारी चीजें like जैसे कि we have font weight which will be of bold so you can see that bold हो गया so this is how we are going to make and let's make it 40 also so this is how it works and now what we are going to make is again a text field and we can write one more text over here saying that create a account for buying new
shoes. Perfect. And let's refresh it, and you can see that, पर ये इतना बड़ा अच्छा नहीं लग रहा, तो let's give it as 15. इसको थोड़ा छोटा करते हैं and remove this, और जो इतना डिफॉल्ट है वही रखते हैं क्योंकि डिफॉल्ट वाला ज़्यादा सही लग रहा था. परफेक्ट. एंड अब ये इसका भी चीज़ सही नहीं लग रहा है, तो अपन इसको भी एक अलाइनमेंट देते हैं. तो यहाँ पे क्रॉस अलाइनमेंट लिखेंगे. क्रॉस अलाइनमेंट के बाद विल जस्ट गिव इट स्टार्ट. तो परफेक्ट, यू कैन सी दैट ये अब एक दूसरे के लाइंस में आ गए. एक चीज़ और कर सकते हैं, यहाँ पे एक साइज बॉक्स लगा दें ऑफ हाइट जो भी है 5. तो यू कैन सी कि अपने ऐप में सारी चीज़ें आ गई. अब लेट्स मेक टेक्स्ट फील्ड जो कि इम्पॉर्टेंट है और जो इस ऐप को एक नए ऊंचाइयों पे ले जाएगा. आफ्टर दैट लेट्स मेक टेक्स्ट फील्ड जिसमें अपन अपनी यही वाली विजिट को कॉल करेंगे. तो लेट्स कॉपी दिस एंड गो टू लॉगिन एंड पेस्ट इट. एंड इस विजिट में वी हैव टू पास सम ऑफ द पैरामीटर्स जो कि होता है टेक्स्ट. And inside text we'll be giving email, because user will be giving his or hers email. So let's give a comma here and try to refresh. So you can see that कि screen पे email वाला वो आ गया. तो let's refresh it and see कि screen पे email वाला एक text आ चुका है. Perfect. And now let's make another size box. And यहाँ इस वाले size box में अपन height देते हैं 2 की and try to implement एक और text box जो कि होगा password का. और let's write enter here and enter here also. सो यू कैन सी दैट कि एक और स्क्रीन आ गई है जहाँ एंटर ईमेल है एंड एंटर पासवर्ड है. बट आई थिंक कि यहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा हो रहा है, तो लेट्स कीप इट एज 10 ओनली. सो या इट्स परफेक्ट. सो ये दो चीज़ हो गई हैं एंड वी कैन, इफ़ यू वांट वी कैन ऐड अनदर स्क्रीन फॉर यू कैन क्रिएट अ होल फॉर्म. अगर आपको एज चाहिए, जेंडर चाहिए, यू कैन क्रिएट अ होल फॉर्म. चलो एक बार बना के देखते हैं. तो दिस इज लेट्स क्रिएट सम ऑफ द टेक्स्ट फील्ड. यहाँ पे यूजर विल एंटर इट्स जेंडर. Perfect. And then user will enter his mobile number, what you say. Then user will enter his what you want to enter, uh, address, because we'll be shipping there. So perfect. You can refresh it and you can see all the fields over here, and this is looking quite good. So perfect. And now we can add one more thing. So let's copy this only, and here what we say, we'll enter this and give it as forgot password. No, it will be there. It can be given as login from Google. Perfect. And the same thing will be in the sign up screen, but there will be more things for giving. Here let's give login from Google and let's make it capital. This is also capital, and we have to make it center because it is not looking good there. So let this go inside the row, and inside the row let's give a main axis alignment, and in the main axis alignment we can basically assign it as a center. Perfect. Let us so it came in the center. And now what we need a button. So for button again we are going to create a widget which will be called as button. And for button I have already made a widget again जहाँ पे दो चीज़ें हैं, तीन पैरामीटर पास करने वाले, सेम एज अ
टेक्स्ट फील्ड जहाँ पे एक पैरामीटर पास कर रहे थे, बट यहाँ पे वी आर गोइंग टू पास टू पैरामीटर जो कि है ऑन टैप। ऑन टैप एक ऐसा फंक्शन है कि जिसपे दबाने के बाद यू आर गोइंग टू परफॉर्म सम ऑफ द फंक्शंस, और उसके बाद टेक्स्ट जो कि बीच में लिखा है। परफेक्ट। तो वी हैव क्रिएटेड अ बटन एंड लेट्स यूज इट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सेम अपन ने एक कंटेनर बनाया एंड यूज्ड अ विजिट जेस्चर डिटेक्टर। तो जेस्चर डिटेक्टर क्या करता है, आपने कहीं पे भी टैप किया स्क्रीन पे तो उसको डिटेक्ट करके उसके करस्पॉन्डिंग एक फंक्शन एग्जीक्यूट करता है। तो सेम थिंग यहाँ यूज करने वाले हैं एंड लेट्स यूज इट। तो जस्ट गो हियर। यहाँ पे दो पैरामीटर्स है ऑन टैप, तो ऑन टैप में जो पैरामीटर वहां अपन पास कर रहे हैं वो यहाँ आएगा। एंड देन होल डिजाइन जहाँ पे एक कंटेनर है, हाइट है, उसको अपन ने कर्व करवाया दोनों साइड, और फिर एक डेकोरेशन प्रोवाइड किया, और फिर अपन ने सेंटर दे दिया। आफ्टर दैट we'll go to our screen again, and in the screen we'll be calling this button named as custom button. Go to login screen, just paste it here, and not this, not here right now, and we'll be calling this, and some of the things will be here like on tap. So we are not giving on tap, we will be giving when we are like implementing Firebase over here. And then text, for text I'll be selecting login. Perfect, that's perfect. And just remove this, and I think we should also give size box over here because it will be required. So let's try to refresh it and see what the changes comes in our app. So this is how it came, but the design doesn't go with our needs. So we should be making for our needs. So that's why I made like that. So here what we gave is let's try to make it more smaller. So you can see here as a size of that, and let's try to like create। देखो सबसे पहले डिजाइन का एक रूल होता है कि आपको सब जगह एक डिजाइन कांस्टेंट रहना चाहिए। अब यहाँ पे अगर थोड़ा सा भी डिजाइन इधर उधर होगा, यू कैन सी दैट कि बहुत सारी चीजें इट्स नॉट वर्किंग गुड। तो इसको अपन ने सही किया, यहाँ पे जस्ट अपन ने ग्रेडियंट लगाया है जो कि इस ऐप के हिसाब से बहुत अच्छा लग रहा है। तो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू मेक दिस। अब एक चीज और करते हैं, लेट्स मेक वन मोर थिंग जो कि रहेगा एक साइन अप बटन। बिकॉज अगर किसी नए यूजर को करना है we'll obviously sign up and then go there, and for signing up let's make an icon, what you say? So yeah, but one more thing I can do is I have like implemented this icon. So what we can do is that key we can use this thing again. So let's copy this container because we same have to use this, और बस अपन को यहाँ पे उसका वो बदलना है। It's just a trial, I should be you can also try। So what we are going to do, just add the thing over here. Perfect. And just changing it to key. Perfect. Let's try to refresh it. I think we have to give the permission over here. Perfect. And try to rebuild it. Then we can see some of the changes in our screen. So yeah, you can see that the icon came, but the icon is not looking good. So let's try to make the design more good. So this is what all the UI making is about. You have to make the UI good until it is not looking good. So that's the best part of it. And let's make it small, and again same thing, let's make it in the center, not center, of row of center. Perfect. Cross axis alignment, and it should be main axis alignment, not cross axis. Main axis alignment, and inside main axis alignment we'll be writing center,
and refresh it. So yeah, it came into center. And the thing we can do is obviously giving a height because it should be separated. So now it is looking something better, or I should be giving it more 680. What do you say? It should be coming in front. Perfect. So this is how it works. And one more thing we can do is that can remove this Google login because we would be not implementing it here. It would be on a separate video. So we can just put it here as a sign up option, where we can give it as, let's try something. Let's give the thing over here again, and right here, don't don't have account, create one, or just give a question mark over here and write it here, create one, CREA. Perfect. And let's make it bold. Perfect. And try to refresh it and you can see it. The design is perfect. Only I think the spacing it. Let's give it here. Perfect. Don't have account, create one. So I think it is looking good. So similarly, let's create one screen for other. This is not our final design. We can change the color according to our needs. Like we can put it as a yellow or a green, whichever you want, of a button. So yeah. So we have created a screen for a login, and the same thing we are going to create for a sign up. So let's make another file and name it as sign up, sign up dot, and here let's again call that stateful widget and name it as sign up. And so we forgot to implement one thing in a login, that we have to go in the next screen. Obviously we have to go. So for that, we'll be using navigator push from the previous one. So basically you don't have to learn everything. आप इधर उधर से copy like code कर सकते हो, ये सब चीज़ें किसी को भी याद नहीं होती, but you should know the uses of the command and the code. So we can just copy this and go to our login screen, और जहाँ पे अपन ने लिखा था create one, इस रो को we'll make it as inkwell. तो ये एक नया widget है जो कि gesture detector भी बना सकते हैं, but inkwell एक इफेक्ट देता है टैब का. तो लेट्स यूज इट एज inkwell. एंड यहाँ पे एक पैरामीटर होता है जो है on tap. Perfect. And on tap will be this and this and not login. Let's sign up. Perfect. And let's try to restart this. And try to navigate to next screen. Here we came. तो ये काली इसलिए दिख रही है क्योंकि अपन ने यहाँ पे कुछ डिजाइन नहीं किया. तो simply what you have to do, just copy that whole scaffold and go to your sign up screen and just paste it over here and import some of the packages which will be important, क्योंकि इसका यूआई मोस्टली सेम होने वाला है. अपन कुछ चीज़ें हटाएंगे. सबसे पहले जो हटाएंगे यहाँ पे लिखेंगे sign up, create a account. Okay, so for login we have to change it. यहाँ पे लिख सकते हैं login to your account, create account for buying, login, create account, or give it a login into your account
फॉर बाइंग न्यू शूज, परफेक्ट। और वहाँ पे तो परफेक्ट था। एंड लेट्स गो टू साइन अप। एंड यहाँ पे अपन को बहुत सारी चीज़ें नहीं लगेंगी, आई थिंक लॉगिन पे नहीं लगेंगी, तो थोड़ा सा लॉगिन को फिक्स कर देते हैं। एंटर पासवर्ड, जेंडर, तो आई थिंक अब सब जगह थोड़ा बहुत चीज़ें हो जाती हैं, चेंज हो जाते हैं। तो लेट्स डू इट। एंड यहाँ पे वो चीज़ें लगने वाली हैं, सो लेट्स रिफ्रेश इट एंड और रीबिल्ड इट। Yeah, you can see that. But what happens is, I think we have removed some of the things which should not be removing. Perfect. And just go to create one, and here you can see all the things. And the one thing we can add over the account is sign up screen, app bar, जिससे मैं पीछे वाली स्क्रीन पे जा सकता हूँ, or remove it. We'll be adding somewhere next. So this thing, and in login screen we can create one more thing which is a kind of important, like this only row. Forgot password. Perfect. And this will be end. Perfect. Let's restart it. And here we have to give size box, and this will be basically less because we have to make it good. Perfect. Now it is looking literally perfect. Here we can just edit everything. So we are getting one more error. So to solve this, let's put this inside a single child widget. तो ये जितना भी रेंडर फ्लेक्स आ रहा है, जो भी चीजें स्क्रीन के बाहर जा रही हैं, वो एज अ स्क्रोल व्यू में चले जाएगी. Okay, single child scroll view widget, and in the sign up also we are going to put it. Perfect. And let's rebuild again and see if anything is coming. So see, the error is gone, and this is inside a scroll view widget, and you can give your email ID and a password. Just say, let's name it E1234567891 perfect. And login will go to the home screen, but if you want to create account, then you can go here, and inside create account you can add gender, mobile number, address, and we have to change one thing over here. In a sign up we can give here as a sign up. Perfect. You can see that the UI is looking awesome, and the same thing we are going to continue in the next lecture. तो नेक्स्ट लेक्चर में क्या होगा, इन सब चीज़ों पे बैकएंड लगाएंगे फायरबेस से, जिससे ये सब चीज़ें से लॉगिन सक्सेसफुल हो जाए और साइन अप सक्सेसफुल हो जाए, अकाउंट बना पाए. तो भाई ऑसम वीडियोस आने वाली हैं. जस्ट मेक श्योर यू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल. एंड अगर आपको ऐसे ही खुद के प्रोजेक्ट्स बनवा लें,
तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक नंबर होगा, प्लीज कॉल टू अस एंड वी विल gonna make very good projects. So thank you for watching, have a nice day and stay connected with me. Thank you.